चलें, इससे पहले के सारे MCQs ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं और वो आपको मिल भी चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करें 48 से। So बच्चों, when concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed using carbon electrodes, this is the first thing that you need to see, carbon electrodes, because they are inert, so they are not going to be, you can say that, interrupt during electrolysis. We just have the product which is purely based on this electrolyte, right? So which rock correctly states the product at the cathode or at the electrodes and the solution remain? कौन से products बनेंगे और बचेगा क्या? तो cathode, negative is cathode, so it attracts positive ions, and if you have more than one positive ion, so it definitely attracts a less reactive one. So here we have sodium ions, and as it is concentrated aqueous solution, so it has hydrogen ions of water as well. So this one is less reactive, so definitely the product would be hydrogen. So the right answer can be B and can be C. So you can eliminate A and D, right? So if you talk about anode, so this is concentrated. So whenever you have concentrated word, you need to keep remember the anion which is present in the salt would going to be produced as salt, because the concentration matters, right? So it means you have chlorine at anode and the remaining solution is hydroxide of water and the sodium of sodium chloride, so it would form sodium hydroxide and the pH of the solutions increases. The right answer would be B. Is that right, every one of you? Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's great. Then which statement about conduction of electricity is correct? Electricity is conducted by aqueous solutions by electrons. No, we know that aqueous solutions contain ions, so it is always conducted by ions, right? Electricity is conducted by metal in by ions. Metal wires हमेशा electrons रखते हैं, delocalized electrons, so it should be electron. Electricity conducted by molten electrolyte. Electrolyte is always solution, so it always conducts electricity by ions. So the right answer would be D. Electricity is conducted by ions in an acid, right, bacho? Yes, sir. Right, sir. Okay, then this one, the diagram shows the electrolysis of molten lead to bromide using inert electrodes, right? So what happened during this electrolysis? Atom change to ion? No, electrolysis में ions convert होते हैं atoms or molecules में. Covalent bonds are going to be break. This is not a covalent bond, this is ionic bond, right? Ions changes to atom and new compounds are formed. So which one should be the right answer? Atoms or compounds wala? C वाला, sir. कौन सा वाला? C. C, sir. C आंसर राइट होगा या D आंसर राइट होगा? कौन बताएगा बच्चों? Sir, C होगा. होगा, sir. कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड तो नहीं हो सकता ना. आपके पास क्या बन रहा है? लेड बन रहा है which is element, and आपके पास ब्रोमीन गैस बन रही है which is also element, and there is nothing else remain in the solution. तो कुछ बच ही नहीं रहा, वहाँ molten solution है आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास C would be the right answer. All right, every one of you? Yes, sir. Okay, then here we have question number 51. In which set of apparatus will the bulb be least bright? Least bright का मतलब है हो सकता है ना भी जले, ठीक है भाई? तो graphite is a conductor of electricity, and here we have molten sodium which is electrical conductor, and mercury is also metal which can conduct electricity very well. All the metals are very good conductor of electricity, and this is going to be the least bright. As you can see this, it is having solid lead bromide which is ionic compound. So for the ionic compounds, it's must that we should have at least liquid form of ionic compounds. It may be aqueous, it may be molten, right? And if you have insoluble salt, so it must be molten, right, bacho? Right, Yes, sir. sir. Then question number 52 is saying aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes. That's something good. Which half equation represent the reaction taking place at anode? Oh my God. If you are talking about reactive electrodes, so definitely they will take part in the reaction. In the electrolysis, reactive electrodes definitely take part in electrolysis, and they always interrupt at anode. They always interrupt at anode. So if they are asking for anode, definitely copper metal is going to be dissolved. They are losing electrons and forming copper ion. So what is the right answer, bacho? It would be Yes, sir. definitely, right? Very good. Then here we have question number 53, in which line in table in all the information is correct. Okay, reaction at electrode product. So बच्चों, loss of electron कहाँ होता है? आपके पास कैथोड पे होता है, और कभी भी मेटल जो है
डायटोमिक नहीं होता, कभी भी मेटल डायटोमिक नहीं होता। मेटल हमेशा कैसे होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? मेटल्स हमेशा मोनोएटॉमिक होते हैं, अकेले होते हैं, ठीक है ना। सेम एज इट इज आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास दिस इज मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक मेटल्स होते हैं वो एनोड पे कभी भी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो मेटल कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट एट एनोड, कभी भी नहीं बना सकता। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एनोड पे होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आपके पास एनोड पे होता है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने वाला लिख दिया है, कैथोड हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फॉर दैट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? एनोड पे होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा, और जब कभी भी आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल बनता है, इट इज नॉन मेटल, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स सारे के सारे सिवाय हाइड्रोजन के सारे एनोड पे बनते हैं। तो दीज ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। Right, बच्चों? So what is the right answer? C would be the right answer. All right. Yes, sir. Okay. Then four substances have the following electrical properties. You all need to learn these properties. Does not conduct electricity in any condition. Any condition में electricity conduct on नहीं कर सकता भाई। कोई भी non metal अकेला अगर होगा तो किसी condition में electricity conduct नहीं करेगा, except graphite. You need to keep remember this. Except graphite. Graphite के अलावा कोई सा भी non metal इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडीशन में नहीं कंडक्ट करता, ठीक है ना। तो इन दिस वे W कैन बी सल्फर, W कैन बी सल्फर। देन कंडक्ट ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन। ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपके पास एसिड हो सकता है। एसिड्स आर एक्चुअली गैसियस। क्या होते हैं ये? आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड इज एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड व्हिच इज गैसियस, सो व्हेन वी डिसॉल्व देम इन वाटर सो दे फॉर्म आयंस। सो इन एक्वा सॉल्यूशंस दे कैन ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मॉल्टन स्टेट में भी नहीं करते, क्योंकि मॉल्टन स्टेट तो ये तो गैसियस है ना, तो मॉल्टन स्टेट में लाने में इनको से दराज लग जाएगा, इतनी टेम्परेचर आपको डाउन करना पड़ेगा। तो इन ऑन एक्वा सॉल्यूशन, सो इट मींस दिस इज राइट। देन कंडक्ट इन बोथ मॉल्टन एंड सॉलिड। मॉल्टन और सॉलिड में मेटल्स करते हैं, कंडक्ट इन बोथ द मॉल्टन एंड एक्वस, और ये होते हैं आयोनिक कंपाउंड। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस बेसिक स्टफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर वुड बी सी। ऑलराइट बच्चों? जी राइट सर। Yes, sir. To keep remember also one more thing कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स के जरिए करता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स के जरिए करते हैं, एसिड्स आयन के जरिए करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आयन के जरिए करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। So you need to know this information as well. Then here we have question number 55. How can sodium be manufactured? Sodium is you know that अगर आपने मेटल का चैप्टर याद कर लिया होगा, so you need to keep remember this कि भाई सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, they all are above carbon. They all are above carbon. So जो भी above carbon होता है वो electrolysis से बनता है। electrolysis से बनता है, सिर्फ extract होता है। electrolysis से बनता है मतलब extract होता है। electrolysis से सिर्फ electrolysis याद रखना जरूरी नहीं है, आपको याद ये भी रखना जरूरी है कि उनके molten salts में से electrolysis of molten salts। so देखें electrolysis वाले दो वर्ड हैं, एक electrolysis ये दोनों हैं, तो आपने याद रखना है 3 है बल्कि इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनमें से सबसे सही कौन सा है आपके पास? द राइट वन इज मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, राइट। एक्वस अगर आप करते हैं तो वी नो दैट लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है, वो चला जाता है कैथोड पर, तो आपको मॉल्टन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू एलिमिनेट सोडियम फ्रॉम द सॉल्ट, राइट बच्चों? Right, sir. एक्वस एंड मोल्टन में क्या डिफरेंस है? बेटा एक्वस और मोल्टन में डिफरेंस है कि एक्वस में पानी भी मौजूद होता है और पानी में आप डिसॉल्व करते हो सब्सटेंसेस को, तो मोल्टन में ऐसा कुछ नहीं होता। मोल्टन में सिर्फ सॉल्ट होता है, वो हीट करने के बाद आप उसको मेल्ट कर देते हो, लिक्विड फॉर्म में ले आते हो, ठीक है? ओके सर, राइट। Then 56 is here. The diagram shows the apparatus used to electrolyze lead bromide using inert electrode. Why does the lamp light up only when lead bromide is melted? जब lead bromide melt होगा तभी तो ये दोनों opposite direction में move करेंगे, इससे पहले तो उनके पास ions ही नहीं होंगे, right? So they are saying bromine atom in the lead bromide are converted into ion when it is melted. ये तो गलत बात हो गई ना, पहले bromine atom था वो ion में convert हुआ जब उसको melt किया, ऐसा कुछ नहीं होता, पहले से ion होता है। but they are strongly attracted by electricity force of attraction. Electron flow करेंगे नहीं भाई, ionic compound में ions flow करेंगे। The ions in lead bromide are free to move only when the solid is melted. So this is the right answer, right? जी राइट सर। Yes, sir. Then question number 57 is saying two cells P and Q containing different liquids.
were connected in series with a battery, a suitable lamp, and inert electrodes are shown in figure. Over which pair of liquids did the lamp light up? तो देखो भाई, इसके लिए आपको याद रखना है प्रोपेनॉल इज अल्कोहल एंड व्हिच इज कोवेलेंट कंपाउंड. तो भाई ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं. दूसरा ये कि आपके पास शुगर सॉल्यूशन इज आल्सो कोवेलेंट कंपाउंड, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. The only possibility is mercury, which is a metal, and hydrochloric acid, which is acid. So they both conduct electricity. This would conduct electricity by electrons, and this would conduct electricity by ions. But both can conduct electricity, and the bulb is going to be light. All right. Right, sir. Right, sir. And this is not in our syllabus anymore, and this is also not in our syllabus. 60. It is also not in our syllabus, so I'm just leaving this. Then question number 61. The heat reflecting shield of some space rockets are gold plated using electrolysis. Which electrode and electrolyte will be used to gold plated the heat shield? We know that जिसको प्लेट करना है वो कैथोड पे लगेगा. तो हीट शील्ड को हमने जो है प्लेट करना है तो शुड बी एट कैथोड, एंड कैथोड इज नेगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव इज एनोड. पॉजिटिव क्या होता है आपके पास एनोड होता है, और नेगेटिव आपके पास क्या होता है कैथोड होता है. तो यू नीड टू कीप रिमेंबर भाई कैथोड पे हमें हीट शील्ड को लगाना है. सो दे कैन बी द राइट आंसर. और क्योंकि गोल्ड प्लेट करना है तो गोल्ड शुड बी एट एनोड ताकि वो डिसॉल्व हो. तो दिस शुड बी द राइट आंसर, एंड द सॉल्ट ऑफ दैट मेटल जो कि आपको वहां पर स्टिक कराना है. ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू. Yes, Right, sir. sir. Yes, sir. Then which statement about electrolysis reaction is correct? Bromine is formed at the anode when molten lead bromide is electrolyzed. This is the right answer. Positive ions are discharged with positive electrode. Positive पे नहीं जा सकता भाई. Sodium is formed at cathode when aqueous में hydrogen जाएगा. Sulfur dioxide किसी experiment में हमने पढ़ी ही नहीं. So A would be the right answer. Molten sodium chloride is electrolyzed. Which change occur at cathode? Cathode पे क्या होता है? There is always gain of electron at cathode. Right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Gain of electron is called reduction. Right, so you can say that आपके पास molten sodium chloride है तो sodium ions जाएंगे. Sodium ions are going to be reduced. So B should be the right answer. All right. Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. And here we have 64. Which positive ions are present in aqueous? Copper 2 sulfate. Positive ion भाई, positive ion इसका मतलब copper ion और hydrogen ion होंगे. बस this is the right answer. It's quite easy. Then this MCQ would be a little bit longer. So you can see this diagram shows the electrolysis of concentrated and diluted aqueous sodium chloride using inert electrodes. Gases are produced and collected in each of the test tube W, X, Y, and Z. Concentrated aqueous sodium chloride, concentrated diluted sodium chloride. Which statements are correct? Approximately equal volume of gases are produced and collected in test tube W and X. W and X definitely ये है आपके पास concentrated. तो इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस बनेगी और इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल सेम होगा. दिस इज द राइट वन. ठीक है. Then approximately equal volume of gases are produced and collected in test tube Y and Z as well. There is a problem in this MCQ because this is dilute solution and sometimes you will see that कि dilute solution में कहीं कहीं आपको क्लोरीन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको जो है ऑक्सीजन लिखा हुआ भी मिलेगा. So, but we need to consider the marking scheme. The marking scheme में वो क्लोरीन को कंसीडर करते हैं. तो in this way they are again hydrogen and chlorine. So ये statement भी सही होनी चाहिए. Then 3 different gases are produced in this experiment. अब ये जो second वाली statement है ये third वाली statement पे डिपेंड करती है कि अगर आप लोग इसको क्लोरीन सपोज कर रहे हैं तो फिर तो नहीं हुई 3 अलग अलग गैसेस, और अगर आप इसको ऑक्सीजन सपोज करें तो 3 अलग अलग गैसेस हो जाएंगी. So Rehma, I think मैंने आपको ये टास्क दिया था कि आप इसकी मार्किंग स्कीम में आंसर चेक करें. What is the right answer of this, Rehma? Sir, B था. B था इसका आंसर, यानी कि जो मैंने कहा है वो सही है. It means we are not considering the oxygen gas over here, क्योंकि मार्किंग स्कीम में भाई वो कहते हैं कि अगर आपके पास क्लोरीन है, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूटेड हो, आपके पास हमेशा क्लोरीन ही बनेगी. और बिकॉज इट इज यू कैन से दैट इट इज मोर रिएक्टिव, और उसका जो है कुछ इस तरह से उन्होंने कहा है कि वो कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से. बट अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली करते हो तो दोनों गैसेस बनती हैं, और इसीलिए हमारे सिलेबस से फर्दर रिमूव हो गया. अब आपको डाइल्यूटेड सोडियम क्लोराइड का लफ्ज हमारे सिलेबस में नहीं मिलेगा. ठीक है भाई. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. देन क्वेश्चन नंबर 66 इज सेइंग व्हिच पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन aqueous copper सल्फेट. अभी हमने किया है कॉपर एंड हाइड्रोजन आयंस. ठीक है ना. एंड द लास्ट वन इज सेइंग इन
electrolysis of molten aluminum oxide, which statement is correct? So the molar ratio of aluminum and oxygen gas is 1:2. We need to see this. We need to see this. But उसके बाद आप देख लेंगे वो क्या कह रहे हैं. Oxygen gas is produced at anode. Reduction occur at anode. Reduction नहीं होती, हमेशा oxidation होती है भाई. So the right answer is C बच्चों. तो हमें ऊपर वाले दो MCQs में फंसने की जरूरत ही नहीं है. वो उसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगी इक्वेशन, उसके बाद उनको इक्वल करना पड़ेगा, आपको रेशो देखना पड़ेगा. तो उसमें आपने परेशान नहीं होना. आप डायरेक्ट नीचे वाले आंसर देखें, हो सकता है नीचे उससे बेहतर और आसान आंसर मौजूद है जो कि आपका टाइम सेव कर सकता हो. All right, every one of you. Am I clear to Right, you? sir. Yes, Yes. sir. Problem? Sir, clear. Any problem? Any question that you want to ask?